तुम्हें पता है बचपन से हमें इंडिया में भाई बकचोदी भाई हमेशा से यही कहा गया है ना कि लाइक बड़ों की इज्जत करो। वो तुमसे बड़ा है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा चाचा है। ओ भाई चाचे और भाई चूतिए होते भाई। बाप चाचा की रिस्पेक्ट करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो। जस्ट बिकॉज दे आर एल्डर्स, लाइक नो मैटर किसी ने अगर जितना भी बड़ा गलती किया होगा, बट यू शुड रिस्पेक्ट देम एंड यू बी लाइक ओके। एंड नो मैटर व्हाट, जब भी उनकी गलती होती है, कुछ भी होती है, whenever you try to show them like यहाँ पर आप गलत थे, you are like तू मुझे सिखाएगा, तू मुझसे तो बन लड़ाएगा। एंड एवरी टाइम यू आर बीइंग सप्रेस्ड ऑफ वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस होता है। और और उस बात का हमेशा फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर रहता है कि व्हाट इज दिस। और बाद में क्या होता है कि जब तुम्हारा कोई यंगर कोई होता है, यू स्टार्ट टू बिहेव द सेम बिकॉज यू हैव बिन गिविंग द सेम ट्रीटमेंट, और उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। द वे यू आर ट्रीटेड यू विल वेरी लाइकली बिहेव द सेम वे। लेकिन प्रॉब्लम यह आती है, we really tolerate unfairness, and to be honest, it is not a good way. A person should be respected because of their actions, not because of their labels. तुम चाचा हो, बाप हो, मोदी हो, कोई भी हो, you will be only respected if your actions are really respectable, if your behaviors are. तुम किसी के चाचा हो, अगर तुम गांजा पी रहे हो, दारू पी रहे हो, बच्चों को अच्छा सलाह नहीं दे रहे हो, then you are not respectable. Now here's the thing, respect, admiration is very much subjective, because किसी के लिए दारू पीना can be a very you know hating thing for them, किसी के लिए न्यूट्रल थिंग, किसी के लिए लविंग थिंग। मेरा चाचा मुझसे बहुत प्यार से बिहेव करता है, हमेशा मेरे को पैसा देता है, अच्छा रहता है, लेकिन वो दारू गांजा बहुत कुछ पीता है। माई चाचा इज गुड टू मी बिकॉज ही इज नॉट अफेक्टिंग मी इन एनी अदर वेज। लेकिन अब सेम जगह पर आई हेट माई चाचा बिकॉज वो वो दारू वगैरह पीता है यार। भाई वो जितना भी अच्छा बिहेव करे, आई हेट हिम बिकॉज आई हेट दोज ड्रिंकिंग स्टफ। अनदर सिनेरियो, अनदर इज लाइक चाचा के साथ दारू पीते हैं, कितना कूल है यार मेरे चाचा, आई लाइक ड्रिंकिंग एंड ऑल। विच रिलेशनशिप इज रियली बैड? नन ऑफ देम इट इज। इट जस्ट two people clashing with different perspectives and opinions. Now here's the thing, you can't change that, you can't do anything about it. What you can do is control yourself and you can deal with yourself कि मुझे इस चाचा के साथ रहना है कि नहीं। Now first guy is thinking that I don't care about what you do in your life, but how you treat me is more important. The other guy, second guy, is like I really care about what people do in their lives. मैं लोगों का लाइफस्टाइल, उससे मैं अफेक्ट होता हूँ। मुझे वैसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं जो लोग दारू वारू पीते, जो गलत काम करते हैं। द थर्ड गाय इज लाइक आई लाइक इवन डूइंग दोज थिंग्स। मुझे वैसे लोग पसंद है जो मेरी तरह चीज़ें करते हैं, और ही डजंट केयर अबाउट मच अबाउट इज इट गुड और बैड। इट जस्ट ही इज जस्ट एक्सेप्टिंग व्हाट ही इज एंड ऑल्सो द अदर पर्सन। नाउ नो वन इज बैड हियर, नो वन इज द विलन, only with different perspective people. And to be honest, this is how respect should be defined, but people are like, no, he is elder to you, you should respect him, or else you are the bad guy, you are becoming bad, you are the worst child if you don't respect the elders. That is the worst thing ever people could say. Like इससे बचपन में कितना इफेक्ट पड़ता था पता है? Like in your future, even if you have become 30 years old, they will still control your life and you can't say anything to them because mentally you are so much weak now that you have never ever the strength to speak back or take stand for yourself. But to be honest, when you start taking small actions, small stands for yourself, and you eventually end up like, I will respect the person who respects my opinion, who doesn't just change your opinions or block it or disrespects you for it, but just accept that who you are. कि लाइक बेटा ठीक है, हाँ तुम्हारा बात अच्छा है, तुम अपनी करो, एटलीस्ट अप टू दैट, then you would be able to respect the other person also. But in Indians,
People like चाचा यार कुछ भी बोल सकते हैं, डांट देंगे, लौड़ा है मैं अच्छा. You are also a human being, you have your own rights. You should be also treated in the same respectable way, the way you do to them. It's their ego which can't handle being attacked against their beliefs and opinions. कि मुझसे जबान लड़ा गया. They want to be the king. Everyone wants the power. So अपने भतीजे पे ही निकाल दो, अपने बेटे पे ही निकाल दो. A lot of people do. But your work is to stay. Take really a good stand for yourself. That I will not tolerate this, no matter who you are in my relative, even if you are my father or anyone. The once you do that, people will genuinely start respecting you. Either you will reveal their true nature and you will leave them because you will not handle anything about them, you will not tolerate any of their behaviors, या फिर they will start respecting you and they will stay with you. अच्छे लोग हैं तो respect करेंगे, वरना people, you know, तुम अगर अब भी बोलोगे कि like if they're good people then they will be not behaving like that. Now here's the thing, there are a lot of people who don't know what your boundaries are. तो उनको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पर इसका लिमिट रख सकता हूँ. When you put a boundary, then people do really respect that sometimes. So it's really important to let people know कि like यहाँ पर तुम्हारी लिमिट है. Like you never say people that you should do this or that when you say a boundary. When you express a boundary, you are like, this is my tolerating level. This is something I don't tolerate more than that. You are not saying them, you are not attacking them, you are saying this is something that is my limit. That's the thing, you know. So I would say in the end is respect behavior. Respect people for their behaviors, their actions, not their labels they have above of their head. लौड़ा मार माँ बाप चाचा दादा blah. Don't care about that. Can you respect the person's actions and behaviors? If not so, that doesn't mean you should go and be like, hey मादर चोद चाचा तू हमेशा यही करता है. No, stay away from them. That's it. You don't let them decide your actions. That's it. You don't obey them. That's it. Not disrespecting them.